Either you will get 5 days, or you will get 10 days, or you will get 15 days. 3 brackets only. हमने PLA को ऐसा मॉडिफाई किया इन्वॉल्विंग सर्टेन पैरामीटर्स, तो 5 डेज से 10 दिन का बीच में जो 5 दिन है उसमें भी कुछ मिल सकता है. किसी को 6 दिन मिल सकता है, किसी बैंक को 4 दिन मिल सकता है, 8 दिन मिल सकता है, 9 दिन मिल सकता है. उसी तरीके से 10 के ऊपर 11 दिन, 12 दिन, 13 दिन, 14 दिन मिल सकता है. नॉट नेसेसरली 15 डेज. 1 day less I can get. That is the way we modified the PLA formula. And the discussion was that since it was discussed with the unions at apex level, bank wise also भी आप हमारे से डिस्कस कीजिए, फाइनलाइज कीजिए. जो पहला का फार्मूला था वो हार्डकोर फार्मूला था, वेरी डिफिकल्ट बिकॉज ब्रैकेट वाज नॉट देयर, ब्रैकेट वाज लिमिटेड. 3 ही PLA आपको दे. SBI ने immediately they pounced on it. पहला का PLA फार्मूला के हिसाब से फॉर द ईयर 23-24 they could have got only 5 days PLA. But they took the opportunity to modify the PLA formula in such a way they got 15 days PLA. SBI में कितना आदमी है पता है? 2.5 लाख लोग काम करते हैं. 2.5 lakh permanent employees working there. From 5 days to 15 days PLA करना है तो कितना करोड़ का बोझ आएगा? तो भी बाधक नहीं किया. नो प्रॉब्लम, विल गिव. हमारा पहले फॉर्मूला के हिसाब से 10 days PLA we were getting. We thought modify and give us. We can give 11 days, 12 days, 13 days, 14 days. PLA के लिए कमिटी अपॉइंट किया, 3 जनरल मैनेजर का कमिटी अपॉइंट किया. क्या कमिटी could have talked to us. It's not necessarily MD और ED बात करना चाहिए. जो कमिटी अपॉइंट किया वो कमिटी भी हमें बुला सकते थे और हमारा व्यूज ले सकते थे, बना सकते थे. नहीं बना. क्या बना? आज आपको किसी को बताओ क्या व्हाट इज योर PLA फार्मूला, यू डोंट नो. हमने स्ट्राइक में जाने की दावा किया, स्ट्राइक में डीएसली के सामने ये सब बात रखा, इसलिए मैनेजमेंट वो नो योर टारगेट के सर्कुलर इशू किया. नहीं तो नो योर टारगेट सर्कुलर वुड नॉट हैव कम एट ऑल. अगर मेरा एम्प्लॉयज को 15 दिन PLA चाहिए तो यू शुड नो व्हाट इज द टारगेट व्हिच आई हैव टू रीच, देन ओनली आई विल गेट 15 days PLA. व्हाट वी आस्क. कंपैशनेट अपॉइंटमेंट नहीं दे रहा है. वे कंपैशनेट अपॉइंटमेंट क्यों नहीं दे रहे हो? नहीं हम रिक्रूटमेंट नहीं किया इसलिए कंपैशनेट अपॉइंटमेंट नहीं. अरे कैसा तो बात है. रिक्रूटमेंट क्यों नहीं कर रहे हो? क्योंकि हमने एक एक्सटर्नल एजेंसी को अपॉइंट किया है, उन्होंने बोला है कि रिक्रूटमेंट मत करो. अरे वाह. मैक्सिमम अपॉइंटमेंट व्हिच कैन बी गिवन in compassionate appointment scheme is a clerical staff. Suppose I die tomorrow, my son is very brilliant, he can be easily accommodated in the officer cadre. Officer category में appointment दे नहीं सकता है. Maximum appointment what he can give is only. और यूनियन बैंक में compassionate appointment has got more value. क्यों? जुना जमाने में यूनियन बैंक में चेयरमैन की वाइफ भी कंपैशनेट अपॉइंटमेंट में आई, क्लियर करके काम की. ये मालूम है आपको? ओके गोपालन जी ने मर गए थे, उसकी वाइफ रिक्रूट हो गया, क्लर्क करके रिक्रूट हुई और शी वाज वर्किंग इन जू तारा विल जू विल पर कंपैशनेट अपॉइंटमेंट. क्योंकि कंपैशनेट अपॉइंटमेंट में लिखा है कि क्लरिकल कैडर में अपॉइंटमेंट देना है तो 5% ऑफ रिक्रूटमेंट हम देंगे. मतलब पिछले साल में हम 1000 रिक्रूटमेंट किए होंगे तो 50 लोगों को हम कंपैशनेट अपॉइंटमेंट इस साल देंगे. 2 साल से आप रिक्रूटमेंट नहीं कर रहे. Since there is no recruitment, I am not giving any appointment in. What is this? आज सब स्टाफ का लड़का भी पढ़ लिख कर ग्रेजुएट है. He is eligible to get appointment in clerical cadre. Our children and wards are well educated today, so that if in case of any death, they are eligible to get appointment in clerical cadre only. सब स्टाफ का बेटा है इसके लिए सब स्टाफ में रिक्रूट होगा ऐसा स्थिति नहीं है. आज बेटा they are also educated, they are well educated, so they are also qualifying themselves. They are qualified to get recruited in clerical cadre. That's what the position is today. More number of applications we are receiving for clerical job.
Very less number of such applications we are receiving for such job. क्यों नहीं करेंगे? What was our demand? अरे भैया ये टाइम आपका 200 लोग मर रहे हैं. On an average बैंक का रिकॉर्ड देखिएगा तो आपको पता चलेगा. On an average 200 people are dying. All 200 are in need of compassionate appointment. If you see, no. Nearly 100 people are getting knocked out because they are financially sound. फाइनेंशियल इंडिजेंसी का क्लास भी है, उसके हिसाब से 100 लोग अपॉइंटमेंट के लिए काबिल नहीं है, दे आर नॉट क्वालिफाइड. Hardly 100 people are asking for appointment. What we said, you give appointment to 100 people, ये 100 रिक्रूटमेंट को फ्यूचर में आप रिक्रूटमेंट करेंगे, उसमें कम कर दो भाई. ये तो कर सकता था कि नहीं? कर सकता है. सपोज 4 साल आप रिक्रूटमेंट नहीं करेंगे तो 4 साल में कोई मर गया तो उसको कंपल्सरी अपॉइंटमेंट मिलेगा ही नहीं. ही हैज टू वेट टिल यू मेक एन अपॉइंटमेंट. हो सकता है. सर्विकल कैंसर का जो आपका वैक्सीनेशन का रिइंबर्समेंट है, दैट हैज कम एज एन एजेंडा फ्रॉम ईज. सुधा मूर्ति जो नारायण मूर्ति का वाइफ है, पार्लियामेंट में बात करती है, राज्यसभा एमपी है, वो बोलती है सर्विकल कैंसर का ये आपका वैक्सीनेशन होना चाहिए. गवर्नमेंट इज टेलिंग ऑल द पब्लिक सेक्टर यू एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटी. और पब्लिक सेक्टर बैंक को भी बोला है तुम भी देखो. सर्विकल कैंसर का जो वैक्सीनेशन का जो रिइंबर्समेंट है, इट इज फाइनलाइज्ड इन 1 डे. कितना खर्चा? इट्स नॉट, इट्स बैंक का एक्सपेंडिचर अकाउंट इज इंक्रीजिंग. Not less than 4-5 crores of rupees bank will spend. As a responsible union, हमारा गुस्सा क्या था? हम मांग रहे हैं compassionate appointment. आप cervical cancer का ऐसा ये, how can you match it? That's a गुस्सा. People are reacting. What we ask, टी बिल्स बराबर सैंक्शन करो भाई. बहुत से टी बिल्स पेंडिंग करता है, किसी को 100 रुपये काटता है, किसी को 50 रुपये काटता है. एसओपी गाइडलाइंस अभी इशू किया, वो भी गलत है. पॉलिसी के हिसाब से एक मीटिंग में हमने ईडी को पूछा था, ईडी साहब बैंक पैसा दे रहा है गाड़ी खरीदने के कैसे दे रहा है? यू कैन परचेज ए व्हीकल. नो नो. Union Bank is the first bank, I can proudly say that. No bank was giving a vehicle loan for substaff to purchase a car. I can proudly say that Union Bank was the first one loan for purchase of a car for a substaff also. Nobody was giving. If he is able to take the loan, purchase a car, let him. हम क्या पूछे? आप गाड़ी खरीदने के लिए मुझे पैसा दे रहे हो, वही गाड़ी को मैं बैंक का काम के लिए यूज करना चाहता हूं तो बोलते हो परमिशन लो. ये किसी बात है? What's the point? I want to go in a car on an LFC to meet somebody. What is wrong in it? I have to take permission from the competent authority. Why I should take it? You want to verify whether I have used the car, I have misused the car. Simply I am claiming. You do that. बैंक ने मुझे पैसा दिया है गाड़ी खरीदने के लिए, वही गाड़ी मैं बैंक का काम के लिए यूज करना चाहता हूं तो आप बोलते हो नहीं. यू गो बाय बस, यू गो बाय टैक्सी, यू गो बाय ऑटो. व्हाट इज द इमेज? A substaff is visiting a customer in his own car and going to do it. That gives an image. आप substaff है गाड़ी नहीं. बैंक. In Noida also, our comrade BN Singh ji will agree. Noida में यही प्रॉब्लम था, because Noida में लोकल लोग है ना, लैंड टेक ओवर किया गवर्नमेंट ने तो कोई पैसा मिला. तो हमारा सब स्टाफ मर्सिडीज में आता था, ब्रांच मैनेजर बेचारा चल के आता था, तो उसको लगता था अरे मर्सिडीज में आता है, मैं चल के आता है. हम देखा है. What I am trying to tell you is, what kind of rules you are making? 20 issues you go through, none of the issues I have asked for a single person. All are in the interest of the bank.
talked to the bank management, told him. No recruitment is there, stagnation will be there, fresh blood will not come, your organization will die. That's the problem. Why you are taking a stand and saying that no recruitment? अचानक एक दिन बोल दिया 4,500 ऑफिसर एक्सेस है. We do not know where the excess officers are there. हम भी ढूंढ रहे हैं, माइक्रोस्कोप लेके ढूंढ रहे, किधर एक्सेस है क्या, देखो यार. I'm telling you. That means bank cannot come under pressure out of competition to do all these things. You do business, increase your business, earn more, show more profit. That should be your approach. Instead of that, don't do recruitment, curtail your expenditure, curtail your people's expenditure, then you make profit. That is not acceptable to us. That's what we are saying. बैंक के अंदर कितना टेम्पररी एम्प्लॉयज काम करता है पता है आपको? हमारे सीएलसी मीटिंग होने के बाद स्टैटिस्टिक क्लियर है, यू विल बी सरप्राइज्ड. बैंक में 76,000 रेगुलर एम्प्लॉयज है, ऑफिसर्स पुट टुगेदर, क्लर्क, सब स्टाफ, ऑफिसर पुट टुगेदर 76,000 एम्प्लॉयज. How many temporary and casual employees are working in the bank? Do you know? 13,000 people. 13,000 people are working. उसका सैलरी तो आप दे रहे हो ना. रेशनलाइज इट, डू इट प्रॉपर्ली. किसी को आप मिनिमम वेजेस नहीं दे रहे हो, किसी को आप स्टार्टिंग बेसिक पे सैलरी दे रहे हो, और किसी को स्टार्टिंग बेसिक पे के साथ आप बोनस भी दे रहे हो, और किसी को 200 रुपया 100 रुपया ऐसा दे रहे हो. व्हाट इज दैट? None of the fellows are employed by any union. All India Indian Bank Employees Union Association has not employed anybody. All these got employed by local management or branch manager. किसका जरूरत है? क्या है? The moment they will tell the truth, acts will fall under. वो बोलेगा नहीं नहीं ये कैसा रिक्रूटमेंट है, चलो चार्जशीट किसी को किसी को रिस्पॉन्सिबल ठहराओ. Instead of resolving the issue on our hand, we are becoming famous for creating another issue to divert the issue from the old issue. That is the way we are. What we are asking. सेंट्रल लेबर कमीशन ने बोला जो आप कर रहे हो गलत है, ये एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ है. Tomorrow if Shankar ji files a complaint against you under section so and so, I will have to prosecute you. Please understand, do something. This we have been telling right from 2 years, 2.5 years, 3 years after merger we have been telling you. Legally you are not tenable, legally you cannot stand there. Please understand. ये बात को बोलने के लिए सेंट्रल लेबर कमीशन की जरूरत है, और सेंट्रल लेबर कमीशन बोलता है इन कंसिलिएशन, I am telling you, I will come very heavily on you. Legally it is not tenable. Please understand. Resolve the issue by talking with the union and sort out. That is the way they are doing. That is why the challenge is there from the bank. बैंक मैनेजमेंट से बात किया है, सीएलसी नेगोशिएशन की भी बात किया है. We have exchanged. Bank is telling that there is nobody who is coming into the bank. I am not aware of it. When you discuss in your executive committee, please tell me who are coming into the bank. बैंक बोलता है सारा ट्रांसैक्शन सब पूरा डिजिटली हो रहा है. Daily crores of transactions we are doing through IMP, VOM or ATMs, all digital transactions are being held. No transaction is being carried out inside. So clerical staff की recruitment की जरूरत नहीं, जरूरत है तो आप बताइए. हमने भी हमारा बैग खोला और लिस्ट आउट निकाला. 40 activities we have shown. 40 activities are carried out inside the branch which are not reflected through your transaction. कोई आपकी क्वेरी पूछने को आता है तो ट्रांजैक्शन में दिखाई नहीं देगा. किसी का सी केवाईसी किया तो आपको दिखाई नहीं देगा, किसका ई केवाईसी किया तो दिखाई नहीं देगा. किसी आदमी रिजेक्टेड ट्रांजैक्शन के बारे में अंदर इंक्वायरी करने को आया, दिखाई नहीं देगा. आरटीजीएस, एनएफटीज, क्वेरीज,
want our people to talk to them about financial product also. So there we have listed out some 35, 40 activities and told the management, these are the 40 activities which are carried out inside the branches where our clerical staffs are employed. That is not getting reflected in terms of your number of transactions what you are. Then they said, okay. Each activity, account opening form. How many accounts? How many accounts? Renewal, loans. Each activity. Then they said, okay, we will do each activity, how much time we will take, you work out with them and finalize so that we can work out some manpower formula. Minimum manpower formula we are asking. अगर एक ब्रांच रहेगा छोटा सा छोटा जो उधर कितना क्लर्क होना चाहिए मिनिमम अग्रीड मैन पावर मेरा नथिंग मैक्सिमम आल्सो minimum manpower you work out or mean manpower you can work out maximum manpower you can work out. Now our association is the job of doing it. Last 3 days we have been continuously exchanging. Yesterday night also after reaching the hotel I have prepared Excel sheet, I have sent it to CGM. So we are in the process of finalizing a staffing pattern for all kinds of branches, whether small, medium, large, rural, semi-urban, based on your activities alone. What is the number of activities? And if we are able to do that, I can proudly say that we will be the first bank to do a staffing pattern in the digitalized mode. This is a must. We cannot say we will not do it. Sub-staff we have asked. 13,000 people are sitting there. There is a problem in e-corporation bank. There is a problem in e-Andhra bank. Those who have been continuing. हमारा यूनियन बैंक का टेम्पररी एम्प्लॉय काम करता है. सब स्टाफ का स्ट्रेंथ क्या है? 6,000 लोग हैं और 6,000 लोग में 700 क्या 800 लोग आर्म्ड गार्ड है. We are telling you, remove this armed guard. Work out how many number of sub staff? 5,000. If you are saying 5,000 armed guard is there, then you have got 8,500 branches, 138, 145 regional officers, 20 FGMOs, audit officers, MLP, RLP, you work out. Even by any standard, if you say one sub-staff, each branch has to be there, there is a shortfall of 4,000 sub-staff. You have to agree. They are agreeing. They are saying yes. There is shortage. You can recruit. How to recruit? You want to only find out formula. वो formula मैं find out करेगा. I have to give them the ways and means so that हमारा tripartite settlement एक है वो implement होना चाहिए. Corporation bank का empaneled employee को अंदर लाना चाहिए. But I have to work out a formula and I have to give them. Now they are at least agreeing. They are saying yes, yes, we will try. What is the problem? In that environment, yesterday we had a meeting about staff welfare committee. स्टाफ वेलफेयर में 55 करोड़ रुपया पहला मिलता था, अभी 90 करोड़ रुपीस मिलता है. 90 crores is given as per the formula accepted at the ministry level. finance ministry level ने कुछ formula के ऊपर तय किया है और बोला ये बैंक का इतना साइज रहेंगे तो इतना करोड़ रुपया देंगे. Now they are not talking about profit because all the banks are making profit. All the banks are making. If you say 13,800 crores, my profit is there. If I say 3% you give me, my staff welfare will be 500 crores yearly. They will not give 500 crores. I know that. But based on the size of the bank, number of employees and all, they are giving you now 90 crores. How to allocate the 90 crores? Yesterday we have decided EDP Parsamita fitting हो गया. We have done some good work. आपकी कैंटीन सब्सिडी है अभी 300 रुपया मिलेगा, 250 रुपया से बढ़कर मिलेगा 1 नवंबर से. We are trying to increase that by another 50 rupees if permission comes. ये women employees का antenatal check है, उसकी पैसा बढ़ा दिया. Children's education expenses जो बुक्स वगैरह लेने का है वो भी हमने बहुत बदलाव लाया है, उसको भी इम्प्रूव कर लिया. एक्चुअली सब स्टाफ को अलग तरीके से 25,000 रुपये तक मिलता है फॉर दोज हु आर स्टडीइंग इन हायर स्टडीज एंड इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स एंड ऑल मिलता है. लेकिन अप टू नर्सरी
nursery to 12th standard, up to 5th standard, nursery to 5th standard, 5th standard to 12th standard, 1st standard and above, we have done it. And consciously, we have reduced the amount for officers community. Officers have also agreed to that. They said no, officers are sizably getting a good salary, so they don't want some kind of assistance. We give more money to sub-staff and clerical staff. So that is the benefit which you got when you work on it. They said, सब-staff को पैसा जास्ती दीजिए, clerical को भी पैसा जास्ती दीजिए. Physically handicapped employees, ये crutches, hearing aids, we have increased them. Physically challenged children education expenses we are taking care. Particularly this mentally retarded children रहेगा, तो उसको अलग तरीके का एजुकेशन देना पड़ता है. वो एजुकेशन देने के लिए अलग चार्ज लगता है. It's a very expensive education. That also we have included. At least yearly some assistance should be given to them. That also we have worked out yesterday. We have done. UBI रिमास रिटायरीज के लिए इंक्रीज कर दिया. 2000 रुपया का हेल्थ चेकअप मिलता था, अभी 3000 रुपया करेंगे. और UBI रिमास की रीइंबर्समेंट के अंदर पोस्ट और प्री हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस भी 1 मंथ का मिलता है ना हॉस्पिटलाइजेशन के अंदर, वो भी हमने इंक्लूड कर दिया है. और क्रिटिकल इलनेस लाइक कैंसर वगैरह रहेगा तो डे केयर एक्सपेंसेस का ट्रीटमेंट भी मिलना चाहिए. ये भी कल अग्री किया है. सर्कुलर विल कम. But we have included 3 new schemes also. One scheme is a very pet scheme which I liked it very much because it's projected from us. Even in Union Bank of India today after merger also, there are 2000 retired employees are there who are not getting minimum pension of 10,000 rupees. All are getting above 40,000, 40,000. After this pension amendment, people are getting. But there are 2,000 employees. They are not covered by free 1986 retirees also. But they are all getting less than 10,000 rupees pension. 5,000 somebody is getting 8,000, somebody is getting 7,000. We found out that they are all erstwhile part-time sweepers who retired from the bank. Very poor people. तो हमने ये बात डिसाइड किया है, इनको मिनिमम 10,000 रुपीज पेंशन देने का, उसका लोड कितना भी होगा वो स्टाफ वेलफेयर मेजर से जाएगा. All the 1,900 people, 2,000 people will get minimum of 10,000 rupees pension. That's a very good settlement in helping the downtrodden people, most downtrodden people. We have also floated another scheme. Retirees who are crossing the age of 70. Retirees, पेंशन तो मिलता ही है, उनको सब्सिडी भी मिलता है. आईडीएफ पॉलिसी के अंदर जो मेडिकल इंश्योरेंस लेगा तो उसको he is getting subsidy also. In addition to that, those who are crossing 75 years, bank will give one-time gratia of 5,000 rupees. One-time gratia. Only to recognize that they are there. Their blessings are required, their service is required. Another scheme is up to the age of 12 too. The vaccination charges up to 2,000 rupees will be borne by the bank. That scheme is also given a name of Union Aish, like that we are trying to give that. That improvement is being made also. We have talked to the management about promotion also. Because you are not recruited for 24, 25. ऑफिसर कैटेगरी में एक भी ऑफिसर रिक्रूट नहीं किया. 25, 26 के लिए भी एक भी ऑफिसर रिक्रूट नहीं किया. Does it mean that our people will not have any promotional opportunities? We have to give promotion. How do we give? You have to give. Union Bank, there is a record. Last 15 years, I can proudly say that every year promotion has been given to all the categories. From sub-staff to DGMs. Now GMs also we can say, because CGMs are getting promoted also. So sub-staff to CGM, every category, promotion has been given. Last year we have not recruited, so promotion cannot be given. If you don't give promotion, if you don't recruit people, you don't give compassionate appointment, what kind of working culture, working environment will be within the bank so that they will be able to overcome that? That's the most important. But bank has agreed, we will give promotions this year also. And consequential vacancies arising out of promotion also,
we'll fill it up through recruitment. They have agreed. So all the clerks who are aspiring to become officers, they can become. It will come. Since that clerical to officer promotion is going to take place, sub-staff to clerical promotion also will take place, identifying 30% or 40% vacancies as per the formula that will take place. So career progression, career aspirations of our sub-staff comrades and clerical comrades will be met through this new understanding. But बैंक को तरक्की के रास्ते में जाने का है तो performance is one of the main issues. What we are telling the management is you give quality oriented passbook printing machines, quality oriented cash counting machines. You are saying, or people are stuck up. हर ब्रांच में जाता हूँ पासबुक प्रिंटिंग मशीन काम नहीं करता. Nothing is to be done with our GM staff or our regional head because they are not involved in it. It is being purchased centrally. Centrally जब आप टेंडर फ्लोट करके ये करके परचेस करके ब्रांच में पहुंचने तक उसका नया वर्जन भी आ जाता है मार्केट में. दैट इज द प्रॉब्लम. नया वर्जन भी आता है. Some of the branches passbook printing machines are not aligning. Some passbook printing machine is having problem. Now all your outward clearing checks are being given to the branches for scanning. Scanner machine should be there properly. Big issue is your network issue. Network, every day my employee is struggling with the network for not less than 1.5 hours, 2 hours out of 6.5 hours. That's the vastav sthiti. Are we to improve that or not? If you want our employees to do cross-selling, upselling, then your environment of digital platform should also be proper. That's what we have pointed out. A quality-oriented passbook printing machine. I mean, if you go to SBI, new kind of passbook printing machine, I have seen that. The machine itself is turning over the page and it is there. You don't have to put it in. Machine खुद pick up करता है. यहाँ 2 सेकंड के लिए मैं पासबुक को वापस ऊपर ले लिया, वो पासबुक अंदर गया. वास्तव स्थिति है, not to laugh. Because these are all the time-consuming factor when you are working in the counter, and you are not only having problem, even customers are getting irritated the way we are giving service also. He will abuse it. Hey, what kind of? This is one of the issues which are raised. You give quality-oriented hardwares and softwares to the people so that they can work very comfortably. If your system is able to respond quickly, our employees will give double the output than what they are giving today. That's our challenge. It's not happening. And then you work out how many people are required, how many people are required. One of the issues what we have raised is also that you try to make your digital product. A branch like MS Park branch where I am sitting, my office is there, I found. One day I went inside and saw why so many checkbooks are piled up here. Then we found out the checkbook issuance is handled outsourcingly through a courier service. वो courier service वाला 2 बार ट्राई करता है या 3 बार ट्राई करता है, और जाता भी नहीं होगा. Simply is bringing to the branch and dumping it, saying that it is not traceable, so you give it. That means outsourced fellow who is supposed to deliver the checkbook is not delivering, he is delivering to your branch. So issuing the checkbook number has increased. We do not understand. We do not want it. Cash remittances outsourcing you are doing. There is no monitoring of cash remittances. वो वैन का ऊपर मॉनिटरिंग किधर होता है? मैं एक जगह पे विजिट कर रहा था एक स्टेट में, तो वी वर गोइंग फ्रॉम ब्रांच टू अनदर ब्रांच इन ए कार. वी सॉ आवर कैश वैन स्टैंडिंग देयर. मैंने देखा वो गाड़ी से, बोला अरे हमारा कैश वैन लगता है. हाँ सर, हमारा आउटसोर्स्ड वैन है. अरे वो क्यों खड़ा है? देखो जरा प्रॉब्लम है क्या? इज कैरिंग कैश? इज देयर एनी प्रॉब्लम? यू आस्क हिम सो दैट वी कैन हेल्प यू. वी स्टॉप द कार, वी टॉक टू हिम. बोला आइए साहब. अच्छा क्यों इधर खड़ा किया? व्हाट इज टेलिंग यू? सर मैं थोड़ा लेट जाऊंगा तो मेरा ओवर टाइम मिलेगा, इसलिए मैं लेट जाता हूँ.
Please understand the outsourcing arrangement. This I have quoted live. All the outsourcing arrangements you have to review whether it is giving you a best, best of their services by the amount which you are spending. देखने का काम है किसका? Nobody is outsourcing fellow is coming. He is coming. He is coming at 5 o'clock somewhere. He is coming at 5:30 somewhere. Some states I have seen that very remote place. Cashiers are made to sit only to hand out the cash because the cash van is there. Multiple problems are there. If cash vans are not coming, cash is not closed, any robbery takes place, you will not get a insurance cover because your timing is over. Within the timing, you have to keep the cash inside. You have not kept, so we will not give you. All these problems you understand. That is why union will do their job. But at the same time, employees should also do their job properly to keep the bank moving. Bank has to perform, bank has to do. If bank doesn't survive, nobody can survive. The way we are moving now, if we move now, there is a possibility another merger can take place. There is a possibility this way also, because you have given the booklet to the DFS. Your merger is considered to be the best merger. Some other weak bank can be asked to be kept on your shoulder so that you keep with them. That's also possible. Merger भी तुमको merger नहीं करेगा. You are an expert, ना? Because your documents you are given. Since you are an expert, you do it. Now I will keep one small bank or some weak bank. So वहाँ privatization करने को मुझे chance नहीं मिला है because of my political thinking. As I told you in the beginning, politically I am weak. So I cannot push forward the agenda of privatization. Now one more round of merger we can do. The government will think, and who will be the first person to be chosen? Union Bank will be chosen because you are an expert. Your books are saying. And if it is going to happen, how difficult it will be for us to move forward, you have to understand. Product knowledge is a must for our employees. What is wrong in it? I am not like some other unions. Everyone should have the product knowledge. How can you say you are working in a bank, you don't know आपका education loan कैसा देता है, आपका retail loan कैसा देता है, कैसा होगा? You are going for a marriage within your own family, and somebody is telling he is so and so, he is working in Union Bank, very big leader. And that fellow asks, सर आपका हाउसिंग लोन में मिलता है ना, हाउसिंग लोन कितना मिलता है? The moment I say मैं पूछ के बताऊंगा, मैं इमेज इसको प्लीज अंडरस्टैंड, मैं इमेज इसको वो बाद में उधर खाना खाने के टाइम बोलेगा ये बैंक में काम करता है, किधर काम करता है पता नहीं, इसको ये बैंक में काम करता है बोलता है, इसके बैंक में हाउसिंग लोन कौन सा रेट में देता है मालूम नहीं. That's not acceptable. Each one of us should know our product very correctly, whether it is digital or whether it is what is the wrong in it. That is the basic knowledge you should possess. How can I say I am working in a bank but I don't know anything? I will only keep the computer open. Oh, चल आएगा तो मारेगा, ये क्या है? This is not a skilled worker's duty. Bank is saying, upgrade the skill. They are giving you training. Otherwise, also as a human being, I am asking you. Can we say I am a clerk, I am a special assistant? I don't know. Can we say? Is it not necessary for us to widen our horizon to understand that this is a must? What is wrong in it? हो सकता है कि आपका ही लड़के को कल एजुकेशन लेने की टाइम whether Union Bank is better or State Bank is better, you may not be able to choose. Am I correct? Product knowledge you should have. Technology you should learn. कॉमरेड बीएन सिंह हमारा लीडर थे यूपी में वो जमाने में, पूछे कंप्यूटर आने के टाइम कितना विरोध उन्होंने किया, खड़ा रह के प्रदर्शन किया, कंप्यूटर को भगा दो, कंप्यूटर नहीं चाहिए. आज क्या वास्तव स्थिति है? एवरीथिंग इज डन ऑन कंप्यूटर. डिजिटल इंडिया, द मूवमेंट यू से आई विल नॉट बी डिजिटली इन्वॉल्व, गॉड डिजिटल कैश तक आ गया, डिजिटल नोट्स तक आ गया. Government of India is pushing everything through digital. They are not bothered. Everything is getting captured.
We like it. Lekin we should also build up our knowledge in this particular area so that you become a benchmark for others. The people should learn from them. When Union Bank was going for CBS, Infosys के ऊपर पहला ट्रेनिंग गए थे, पहला ट्रेनिंग. Before starting the CBS, first training has to be imparted to our people so that they will become the leaders. They will go to the branches and install machines and teach people. First batch of people, 40 लोगों को select किया. Leader was the chairman. We went to him and told him, all the 40 are officers. What do you mean? Your CBS will go with only officers? Your CBS has to be used by the clerical staff. So clerical staff also should be given. Some change makers should be from clerical staff also. He included 5 clerical staff. 40 was increased to 45. 45 was taken in Bangalore. Training was given. और लास्ट डे में इन्फोसिस का एग्जाम हुआ और फर्स्ट 5 as our clerical staffs only. I can proudly say that 5 फर्स्ट 5 रैंक हमारा clerical staff है. वही clerical staff को हमने यूज किया कैसे चेंज है, बिकॉज यू गो टू द ब्रांच, एक ऑफिसर रहेगा तो क्लरिकल जो समस्या है उसको बता नहीं सकता है, वो क्लरिकल स्टाफ रहेगा तो फ्रीली बता सकता है. All 5 were they all become later on scale 2, scale 3, scale 4. That's a different thing. But with that perception, we told the management, clerical staff should also be important knowledge, and they 5 leaders. The way Union Bank adapted to the technology, no other bank has done it. I can proudly say that. Today, Reserve Bank of India is asking for some clarification on any of the technological platform related things. First, they will ask Union Bank. That's the way we are built up. But our staff cannot say, I will not lead. I will not do. I cannot read. That's not acceptable as a union also. You should, because your relevance is more important. Keeping the digital platform in mind, हम लोग ने 12वां bipartite में आपको ड्यूटी दिलाया. In the digitalized environment, if you are going to say again and again, old way of doing, you will become redundant. They will say, as long as Shankar is there, okay, when Shankar is retiring, don't recruit clerks. Ajay Kumar Singh is there, till he is there, he letting work. After that, he retire. So creating a space for you within the system is the most important thing in digital environment. क्या करेंगे? 50,000 तक 1 लाख तक करेंगे. इंस्ट्रूमेंट पास करना तो करना है ना. आप इंस्ट्रूमेंट पास नहीं करेंगे या बैठ के डेटा एंट्री करेंगे तो आपका ड्यूटी नहीं है. They have not made any changes. हमने बैंक मैनेजमेंट के साथ बैठ के एसओपी गाइडलाइन इशू किया. इसलिए हमारा बैंक में देख सकता है एटीएम फीडिंग यू कैन नॉट सेंड, कैश रिसेलेक्टिविटी यू शुड नॉट सेंड, बिकॉज वी हैव क्रिएटेड दैट प्रॉब्लम्स इन सच ए वे. आज मेरा आईडी में चेंज होना मांगता है, आपका आईडी में चेंज होना मांगता है, उसका आईडी में चेंज होना मांगता है. दैट मीन्स एवरीबॉडी हु इज वर्किंग आईडी शुड बी क्रिएटेड विद अ पासवर्ड so that they can be held responsible for whatever they do in the machine. That is not possible in the digital world. They said, no, we don't want people. They told us, we do not want our people to send for marketing. They have written in the SOP, read that. They will not be sent for recovery also because they know they have to give additional expenses. But sitting inside the branch, knowing very well about the product, talking across to the customers, across the counter, will you do marketing or not? Yes, you should do. What is wrong with it? क्या करते हो? आपका लड़का क्या करता है? करता है. Yesterday we have suggested. I hope bank will do. आपका SBI अकाउंट का स्टेटमेंट आपको मेल में मिल रहा है? क्या मिल रहा है? मेल में स्टिल स्टेटमेंट मिल रहा है. If bank is able to use the data in appropriate manner, they will come to know what my need is. Accordingly, the product can be displayed in the statement also. Printed statement can come. Your digital product can be marketed. Statement also will carry.
something. In Bombay में मैं महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का बिल आता है ना, सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का बिल नहीं आता है, उसके साथ किसी का एडवर्टाइजमेंट भी आता है. That means they use it as a mode for advertising people. Digital also you can do. अगर बुजुर्ग आदमी है 65 years है 60 years, you can give him समृद्धि का अकाउंट है, you can give him loan against pension we are giving. Somebody who is studying, you can give him housing education loan is there. That means based on the database of what you have collected, you can give, but you are not using. Passbook is also plainly carrying your front page, and there is no any other product is there, displayed there. So we should do from our point of view also. But at the same time, we should confront the management also on wherever issues which are not against your community, which are again not against the employees, which are against the service conditions, you have to do it. You have got a better role to play. If you don't keep, I can tell you very proudly, many of the executive directors in Union Bank have joined as clerk and risen to the level. We have seen many of the chairmen of the bank, MDs of the bank, who has come from clerical cadre. Most of the banks you can go and see, general manager, CGMs, they were all clerks once upon a time. So clerks were feeding the talent for future. It's a fact. But you don't keep your relevance for your role inside the bank, then there cannot be any appointment of clerk. ABA saying 1 lakh vacancies there of clerical employees in banks, you should fill up. That means you can give appointment to 1 lakh young fellows who are waiting with high degrees, highly qualified fellows are sitting. Today, who is coming in the recruitment? You see, last 3 years, 4 years, whoever has come in the recruitment, you see. All are engineering graduates, MBA graduates, double MBA, MCA, not only PCA, MCA. They are all joined as clerks. They are highly qualified for working in different area, but they have joined the banks because they are not getting jobs suiting to their ability. That's why they are called. Creating opportunity, creating employment opportunity for thousands of people waiting outside is your job. As a member, as a union, it is our job to create jobs for people to get employed. If you say we will not create employment, you are doing the biggest, harm to the society also. You do anything, you own up something, keep your relevance inside the bank, so that more and more clerks can be recruited, they can be brought into the system. That's why you have to understand. As a union, we will do our duty. As an employee and members, you have to also do your duty. The duty has to be understood perfectly. ट्रेड यूनियन का मतलब नहीं है कि जीएम और रीजनल मैनेजर की कैबिन के बाहर बैठ के धरना या मोर्चा, ये तो ट्रेड यूनियन. ट्रेड यूनियन इज वे ऑफ लिविंग, your standard of living, the way you have to treat them, that you have to do that. That comes only by working together constantly, continuously, and that comes through an understanding only. All are not going to remain clerks. People who want to take promotion, they can take promotion also, they can go. But clerical cadre should be kept in the bank by owning up more jobs, more responsibility, more understanding. That's to be done. Otherwise, all will be officers doing the job of clerical only, but they will be called officers. Workman category you cannot give. That is why you have to understand the responsibility of keeping our cadre is ours. The responsibility of making ways for others to come into the bank is also ours. The way we work, that is also ours. The way we work together to improve our service condition, improve our, other facilities, all is ours only. That is why your executive committee holds an important position. Your executive committee should discuss this in a enlarged platform, rather than diluting it to the
4 more problems. The branch problems will be there, somebody will be there, then you can list out. But as a union, will you channelize your thoughts and energy to create a new future for you? That is the most important question. And I am sure this executive committee will do that. Because Jharkhand, you have come from nil. And today you are standing as a force to reckon with. The more you work with clarity, understanding the policies of government. Where the policies of the government has to be opposed, we have to oppose. Policies of the Reserve Bank has to be opposed, it has to be opposed. Policies of the management also has to be opposed, it has to be opposed. Where it is creating a hindrances to our way of working, our service conditions, or our benefits and our privileges, then you have to oppose. But in the process, it is you who have to suggest the alternative also. If you and myself do not suggest the alternative do not come from outside. Alternative also has to be given from here only. So unless you do that, alternative cannot be there. Giving only, I will point out only mistake. मोदी गवर्नमेंट ये करता है, मोदी गवर्नमेंट वो करता है, मोदी गवर्नमेंट ठीक नहीं करता है, मोदी गवर्नमेंट बोलता है क्या अल्टरनेटिव है बताओ. Nobody is able to say alternative. Like that we should not be there. We should be able to give the alternative also to the management to show them that we are capable of projecting another idea. Through that idea, bank can progress, everybody can progress. That you have to do. On behalf of All India Indian Bank employees, we will ensure no benefits of yours is curtailed. We will procure more benefits also. Like the way I told you, staff welfare. Even day before yesterday, staff loan insurance also we have given you a circular also. How many of you have gone through it? Do not know. You have added up. Today Union Bank is the only bank which has got staff loan insurance. By insuring your staff loans, you are eligible for compassionate appointment also we have made. Suppose I die tomorrow with a housing loan of 60 lakhs, with a vehicle loan of 10 lakhs, and overdraft of 5 lakhs. Everything is getting adjusted through this staff loan insurance. My family is freed from all these encumbrances of the property, but at the same time, my family can apply for compassionate appointment also, and when they get a compassionate appointment, it becomes a easy living for them. That also we have to do. So privileges, benefits, your thing will ensure, but at the same time, as a member of this great organization, you should also play your role in the right way, which you will do that with this expectation. Thank you very much for giving me opportunity. How can someone not be inspired with those words? Thank you so much, sir. Your gracious presence and wisdom has always illuminated our path for us. In the heart of our team, a leader stands tall. With vision and wisdom, they inspire us all. Through challenges faced, they guide us with care, creating a workplace where success fills the air. Ladies and gentlemen, please join me in welcoming such a team leader, our Honorable Field General Manager, Ranchi, Mr. Baijnath Singh, to grace us with few words. Thank you, madam. Respected Comrade N. Sankar, Regional Head Ranchi Alok ji, Pandey ji, Ajay, and other dignitaries who are present here, and आप सभी कॉमरेड्स जो यहाँ आए हैं, एक्जीक्यूटिव कमिटी की मीटिंग है इसमें, and really some ladies comrades are also here. I come to know कि today यहाँ local festival भी है, इसके बाद भी इतनी अच्छी संख्या में लोग यहाँ दिखाई दे रहे हैं. मैं आप सबका अभिवादन करता हूँ और really बिरसा मुंडा का नाम लिया जाता है. उस धरती से इस तरीके की बिगुल बजाना, इस तरीके का आह्वान होना और किसी भी एक शुभ कार्य का शुरुआत होना बहुत अच्छा संकेत है. फ्रेंड्स, कॉमरेड शंकर को सुनना मेरे लिए हमेशा एक मेरा एस्पिरेशन रहा है और मैं जैसे आया, यू ऑल हैव जस्ट गिवन मी अपॉर्चुनिटी टू स्पीक अबाउट समथिंग, बट आई हैव जस्ट डिनाइड. आई वांट टू लिसन कॉमरेड शंकर एंड फॉर द लास्ट 1 hour व्हाटएवर ही हैज टोल्ड,
आपने कहीं ये नहीं देखा होगा कि ही इज अगेंस्ट द वर्क ऑफ द बैंक। इन्होंने लास्ट में एक बहुत क्लियरली कहा, सिटिंग बिफोर द केबिन ऑफ द रीजनल मैनेजर और द जनरल मैनेजर इज नॉट द वर्क ऑफ द ट्रेड यूनियन। सुना आप लोगों ने? नहीं सुना? कितने लोगों ने सुना? कुछ लोगों ने नहीं सुना। जो अगर ये बैठते हैं केबिन के सामने, उन्होंने नहीं सुना। दिनेश शर्मा ने हाथ नहीं उठाया, मतलब ये नहीं सुना। Friends, this is the image of your state. This is the image of the bank. मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि मैं तो, जैसा कॉमरेड शंकर ने कहा, मैं आज जीएम हूं। कॉमरेड से जीएम तक की यात्रा बड़ी ही रोचक रही है, बहुत ही रोचक रही है। और ये ऐसा नहीं कि जीएम बनने से पहले मैं अपने आप को जीएम सोचता था, मैं जीएम बनूंगा। मैंने कभी सोचा भी नहीं था। अगर कभी मुझे बायोग्राफी लिखने का मौका मिलेगा तो जरूर ये बात लिखूंगा। मैंने कभी सोचा नहीं था। एक यात्रा थी, कभी शुरू किया यूनियन बैंक में, जिस दिन रिक्रूटमेंट हुआ शुरू किया। वो पूर्वांचल का एरिया था, ईस्टर्न यूपी जिसे बोलते हैं, और उस समय यूनियन बैंक का प्रेजेंस बहुत ज्यादा नहीं था। बहुत कम लोग जानते थे इस यूनियन बैंक को कि ये पब्लिक सेक्टर बैंक भी है। लेकिन जब यात्रा शुरू किया वहां से, तो कभी उस यात्रा में सुखद अनुभूति भी होती थी, कभी नेतृत्व प्रतिभा दिखाने का मौका भी मिलता था, और कभी आप जैसे लोगों से मिलने का, जो रूबरू होने का जो मौका मिलता था, जो विचारों का आदान प्रदान होता था, वो आज इस लेवल तक पहुंचने में बहुत मदद किया। फ्रेंड्स, अगर इस सेंचुरी की बात करें, जो 21वीं सेंचुरी चल रही है, हम 21वीं सेंचुरी को एक कोरोना कालखंड जो इसमें आया, इसके लिए बड़ा ही विभत्स रहा, बड़ा ही डरावना रहा। कई लोगों ने अपनी जीवन समाप्त हो गए, उन लोगों के खत्म हो गए। तो एक ऐसे पीरियड को हम भूलना चाहते हैं, लेकिन कई अच्छे काम भी हुए इस 23-24 साल का जो 21वीं सेंचुरी का पीरियड हुआ इसमें, जिसमें आप सब लोगों ने देखा हो कि जब सेंचुरी में कंप्यूटराइजेशन, जब 21वीं सदी शुरू हो रहा था, उस रात को बड़ा डरावनी रात थी। वो लोग सोच रहे थे कि ये कंप्यूटर हैंग हो जाएगा और आगे दुनिया इसके बाद रहेगी कि नहीं रहेगी, किस तरीके से ये जो सॉफ्टवेयर है काम करेगा, क्योंकि वो उस समय तक जो न्यूमरोलॉजी और न्यूमेरिकल हिसाब से जो प्लानिंग किया गया था, वो वही लास्ट डेट था। लेकिन दैट इज नॉट द एंड ऑफ द टेक्नोलॉजी। वो एक चैलेंज आया, उस चैलेंज से दुनिया निकल करके आई और कंप्यूटर्स उसके आगे किए। वो एक समय था जब ट्रेड यूनियन उस कंप्यूटर का विरोध करता था, क्योंकि इंडिया का पॉपुलेशन इतना ज्यादा है कि जॉब की समस्या यहाँ हमेशा बनी है। आज भी एम्प्लॉयमेंट की समस्या है। ट्रेड यूनियन ने टेक्नोलॉजी का विरोध नहीं किया, उन्होंने कहा था कि रिक्रूटमेंट होना चाहिए, हमारा मैन पावर कट नहीं होना चाहिए। दे आर नॉट अगेंस्ट द टेक्नोलॉजी। लेकिन आज आप जरा कल्पना करिए, अगर ट्रेड यूनियन उस समय ये कहा होता है कंप्यूटर नहीं चाहिए, आज आप क्या कल्पना कर सकते हैं दुनिया को बिना कंप्यूटर का? किसी बैंक की कल्पना कर सकते हैं? आप में से बहुत से लोग जो अभी ज्वाइन किए हैं नहीं देखे होंगे, वो मोटी मोटी जो लेजर्स बुक्स लिखे जाते थे बैंक्स में, और उनका बैलेंसिंग करना बड़ा टीडियस काम हुआ करता था, बहुत मुश्किल हुआ करता, और वो बैलेंसिंग होते होते इतना टाइम लग जाता था कि कभी कभी जो छोटी मोटी कभी गलती हो गई तो कस्टमर्स मनी लेकर के, आपका पैसा लेकर के कहीं और है, उसकी वसूली करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन आज हर दिन शाम में हिसाब किताब हो जाता है, कैश का कैश से टैली हो जाता है, लेजर का लेजर से टैली हो जाता है, और आप जब शाम में घर जाते हैं रिलैक्स हो जाते हैं कि आज का मेरा हिसाब किताब। आज जब ट्रेड यूनियन में उस समय जो लीडर्स थे, उन्होंने इस चीज को विजुअलाइज उस समय भी किया था, और इसीलिए 1993 में इस कंप्यूटर के जो इम्प्लीकेशंस थे उसको मैनेजमेंट के साथ साइन किया गया था। और आई एम राइट कि उस समय इसके बदले में एक एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट उस समय के एम्प्लॉय को ट्रेड यूनियन ने दिलाया था। दैट आर द लीडरशिप। इट कम्स इन टर्म्स ऑफ द मनी। और आज जब उस कंप्यूटर के सहारे जब हम
पढ़ रहे हैं तो हमारा डाटाबेस वर्किंग और एनालिटिक्स, ये जिसको हम समझते हैं कि यही कंप्यूटर है, नहीं, आज इससे भी हम आगे निकल चुके हैं। डेट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जो भी कह रहे थे ना कॉमरेड शंकर, कि अगर आप एक बार कहीं फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे या किसी वेबसाइट पे जाके आप किसी चीज को पुश करके देख लो, वो आपके टेस्ट को जान जाता है और अगला एडवर्टाइजमेंट आपको उसी से रिलेटेड आपके पास आना शुरू हो जाता है। आप क्या समझते हैं, ह्यूमन इंटेलिजेंस का जवाब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो सकता है? ओनली 4 इज टेलिंग नहीं, मतलब रेस्ट इज टेलिंग यस। हो सकता है? हो सकता है कि नहीं हो सकता है? एक शोर में बोलिए कि हाँ या ना। अगर डिवीजन है तो बताइए। नहीं हो सकता है। फिर जब नहीं हो सकता है तो हम आज अपने बैंक में अपने कस्टमर को क्यों नहीं पहचान पाते हैं कि हमारा कस्टमर का टेस्ट ये है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पहचान ले रहा है कि आपका टेस्ट क्या है। नेचुरल इंटेलिजेंस क्यों नहीं पहचान पाता कि हमारे कस्टमर का टेस्ट क्या है? हम क्यों नहीं जान पाते कि एक कस्टमर को हम कौन सा प्रोडक्ट दे सकते हैं? Why it is the need of the hour कि हमें कॉमरेड शंकर कह रहे हैं कि स्टेटमेंट में मैंने कहा कि मैनेजमेंट के लिखो कि ये हमारा प्रोडक्ट है। क्यों ऐसा आता है? फ्रेंड्स, कभी भी जो नेचुरल इंटेलिजेंस है, जो ह्यूमन ब्रेन है, इसका अल्टरनेट कंप्यूटर नहीं हो सकता। हम जो इनपुट रॉ मटेरियल्स में डालेंगे दैट विल कम आउटसाइड, लेकिन डालना क्या है ये आपको डिसाइड करना है। एनालिटिक्स क्या करना है आपको डिसाइड करना है। कस्टमर सर्विस इज सेम लाइक दैट। आप जैसा इनपुट डालेंगे कस्टमर सर्विस में, वैसा ही कस्टमर आपके साथ बिहेव करेगा। इवन यस्टरडे कॉमरेड शंकर इज टेलिंग कि एक एमडी मैंगलोर में रहते हैं गोपाल कृष्णन, उनके भाई भी इस कॉर्पोरेशन बैंक में काम करते थे, अभी तो रिटायर कर गए। ही वाज अ स्पेशल असिस्टेंट देयर एंड गोपाल कृष्णन वाज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और द जीएम ऑफ दैट। बट वो पेन गोपाल कृष्ण सर के कहीं ना कहीं माइंड में, हार्ट में था कि जो रिकॉग्निशन उनके भाई को जो स्पेशल असिस्टेंट है उसको मिलता है, वो रिकॉग्निशन सोसाइटी में उसको मिलता है। Even though he is the executive director, he is the MD, he may be the some post holder of पोस्ट से रिकॉग्निशन नहीं मिलता। वो मिलता है आपके फेस वैल्यू से, आपके बिहेव से, आपके काम से। आप अपने एरिया में जानकर क्या कर रहे हैं कि हमें अपने प्रोडक्ट के बारे में जानकारी होना चाहिए। हाउ डिटेल ही दिन को एक बड़ा बैंक बनाना, को एक बड़ा बैंक बनाना, your vehicle or your vehicle will be in the danger. Fast cash retention limit bank कर लेंगे। हम आपके सामने रखूंगा। आप सब कार्ल मार्क्स के बारे में सुने होंगे? कर लेंगे। हम आपके सामने रखूंगा। आप सब कार्ल मार्क्स के बारे में सुने होंगे? नहीं। कार्ल मार्क्स 1818 ऐसा विचारक, सामाजिक क्रांति को लेकर के आने वाला, जिसने 19वीं सदी की तकदीर बदली। नहीं पता क्यों कहा मजदूरों? इसमें यूट्यूब क्यों नहीं कहा? दुनिया मार्क्स प्रधानमंत्री एक हो सकता है तो है। आप सब जब वापस लौट के जाएं तो एक प्रोफेशनल बैंकर बन करके, जैसा कॉमरेड शंकर ने आपको कहा है, be a professional banker and be a face of the Union Bank of India, so that your bank become the most favored and the choice of your bank, of your customer. Thank you very much. All the best. Thank you. But Union Bank is